Another warm up with the same weight. And then we move on to the working sets of lateral raises. ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जो मैंने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड जो है ओलंपिक वेट लिफ्टिंग उन लोगों ने सीखा है. This basically bulletproofs your shoulders and it's really good for your rotator cuff. You just have to keep your arms straight. तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी lateral raise, so that I can pre-exhaust my delts, side delts. और उसके लिए lateral raise से अच्छी एक्सरसाइज कोई है नहीं. So we are going to focus on the form. और इसमें थोड़ी सी फॉर्म डिफरेंट होगी, थोड़ी सी अलग होगी. यूजुअली हम इस तरीके से lateral raise लगाते हैं, थोड़ा फ्रंट में, राइट. और उसमें हम हैवी लोड भी लेते हैं तो बॉडी का स्विंग भी आता है. इस तरीके से नॉर्मल लगते हैं. बट व्हाट वील डू इज़ ऐसे ना करके डंबल्स को साइड में रखेंगे and then we'll turn the dumbbells. It's just turning your wrist, your forearms inwards. Now the load is completely on the side delt and nothing else. और इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा बॉडी का. So strict form, elbow up, this, and trust me, this will be the maximum range that you can achieve, range of motion. This, you see, no body momentum, my arms are straight, elbow facing up, and my wrist is facing inside, inwards. This targets your medial delt, and this is a variation of the lateral raises by the godfather of bodybuilding, Charles Glass. Okay. Alright, we can increase the weight. Alright, so I've increased the weight, now it's 10 kgs. So I hope you understand the form now. Dumbbells like this, inwards, not like this, not like this. Turn them inside, elbows should face up and lift with your side delt with no body momentum. 4, 5 are at the top of the range, right, top of the motion. Try to hold there for like half a second or 1 second, right. This will majorly impact your targeted muscle, in this case the lateral delt, right. So instead of just going through the motion, try and stop here for half a second and then try to control the weight on the negative. Force up, stop, negative, controlled. Alright guys. Ooh.
The pump is actually really good. So moving on to the next exercise. This is the machine shoulder press. This is basically set at an angle like this, so it majorly focuses on the side delt only, and since to get the broader look you have to work more on the side delt. मैं ये सब सामान नीचे रख देता हूँ. Yeah, so this part is majorly your side delt, this part. So to work more on the side delt you have to focus on some exercises like we did the lateral raise, and now we are going to do the shoulder press. The military press is a front movement, so all the front movements will focus on the front delt, and all the movements, pressing movements that have this angle, so they will focus more on the side delt. आप खुद से एक बार करके देखो, आप इस तरह से करके देखोगे और फिर ऐसे करोगे तो आपका साइड डेल्ट एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. सो इससे ही पता चल जाता है, कॉमन सेंस है कि ये एंगल साइड डेल्ट के लिए अच्छा है, ये एंगल फ्रंट डेल्ट के लिए अच्छा है. ऑलराइट, आई होप आई एम विजिबल. आई डोंट नो, यही एक एंगल है जो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ. सो ऑलराइट, पुश. Oh fuck. Alright. It's heavy. One. Alright, the first warm-up set went well. इसमें warm-up set किया, so the next set will be the working set. और मैं थोड़ा सा heavy duty principle लेके चलता हूँ कुछ movements में, और कुछ movements में I go for like usual 3-4 sets. So basically I'll increase the weight and go for 6 minimum reps, 4 to 6. 6 actually, not 4, 6, and maximum 8 to 10, but I'll try to achieve failure in that rep range, and only for like 1 or 2 sets maybe. So one was this warm-up set, then now will be my first working set, and depending on how it goes I'll decide whether to do another set or not. Anyways, fuck it. My left arm is feeling weaker. One. Oh, fuck. Woo. All right. Man, what a set. This one set was enough. Actually, ज़्यादा ही हो गया weight थोड़ा. So I'll drop so that I can get more intense.
Fuck. Pushing through the pain is how you get results, is how you get success. Alright guys, so the next movement is bend over lateral raise. Now this is for rear delts. Lateral raise but bend होके, like हम ये movement करते हैं lateral raise, यही movement करना है but bend होके. So the focus shifts from the lateral delt to the rear delt. दो एक्सरसाइजेज में काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी अगर ठीक से करो तो, बट यू गोटा कीप गोइंग. अब आप ये बैठ के भी लगा सकते हो और खड़े होके भी. आई प्रेफर स्टैंडिंग बिकॉज आई कैन यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ मोमेंटम दैट वे, राइट. डम्बल्स अगेन लाइक दिस, not like this. And try to eliminate as much momentum as possible. One, 7, 8, 9, So when it comes to isolation movements, I increase the number of sets, but I also increase the weight in each set to achieve failure. But apparently I have experienced that I am very strong in pulling movements. So whether it is any back movement or this rear delt movement, so I'm strong. So I'm able to lift 12.5, 15, even 17 kgs. But in 17 kgs I use a little bit of momentum, so I'm not lifting it. I did 15 kgs in the third set and I got 12 reps. Now I'm using 12.5 again because now my rear delt is pretty exhausted. So I'll try to get 12 to 15 reps from this in the last set. So this is how I increase intensity in my workouts. All right, 15, 5 more. Fuck. Woo. So you might have noticed that in the last 5 to 6 reps I used momentum, but it's not wrong. बाकी सारे reps मैंने proper form में लगाए, and when I achieved failure, to push beyond my limit, I used a little bit of momentum, but I didn't lose control over the weight, and I didn't lose my muscle-mind connection, right? So many people do that mistake when using momentum. I didn't, so that's why it's allowed. Yeah, all right. So our next movement is another rear delt movement. अभी मैंने टी शर्ट डाली हुई है तो आपको पता नहीं चल रहा, बट ये बहुत पंप हो गया एक्चुअली ये वाला पार्ट. दिस इज़ माई फेवरेट मूवमेंट. इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा आता है. 1, hold. You have to hold in every rep. 4, 7, and you have to pull from your elbows.
Some force reps. Okay. All right. So you have to focus on the form, right? जो ये खींचोगे आप, pull from your elbows, not from your wrist. Wrist बस एक हैंडल की तरह पकड़ने के लिए है, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, it's up to you. You have to pull from your elbows, और elbows यहाँ तक आएंगी पीछे. पीछे क्यों आएंगी? Just imagine yourself hitting a back double biceps pose. अब जब आप बैक डबल बाइसेप्स लगाते हैं तो आपके रियर डेल्ट्स एक्टिवेट होते हैं, मैंने अभी भी जस्ट बताया था. इसीलिए आपको वो मूवमेंट, वो पोज मिमिक करना होता है while doing this exercise. So when you pull और यहाँ पे आके आप रुकते हो, पूरा होल्ड करते हो, सो आप अपने बेस्ट पोज में वेट होल्ड कर रहे हो. उससे क्या होगा? उससे आपकी मसल उस पर्टिकुलर पोज में मैच्योर हो जाएगी. The second last movement of our workout today. Actually last movement because मैं shrugs नहीं करूँगा. मेरे ट्रैप्स ऑलरेडी काफ़ी ट्रेन हो गए थे जब मैंने डेडलिफ्ट करी थी इस वीक. सो मैं ट्रैप्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करता क्योंकि मेरे ट्रैप्स अच्छे हैं, आई बिलीव काफ़ी अच्छे हैं. सो दिस विल बी द लास्ट मूवमेंट फॉर शोल्डर्स. उसके बाद हम एक मूवमेंट करेंगे बाइसेप्स का, एक मूवमेंट करेंगे ट्राइसेप्स का, एंड विल फिनिश ऑफ विद काफ्स. देन वी हैव सम कार्डियो. अभी भी काफ़ी कुछ बच रहा है बट एटलीस्ट शोल्डर्स एंड होने को आ गए. सो ये मूवमेंट है हमारा बिहाइंड द नेक प्रेस, वन ऑफ माई फेवरेट मूवमेंट्स. ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कर नहीं पाते हैं. उसका रीज़न है कि आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है. सो कैसे करनी है? शोल्डर मोबिलिटी इंप्रूव करो, ये एक्सरसाइज कर पाओगे. और इस एक्सरसाइज को अवॉइड मत करो वरना शोल्डर मोबिलिटी कभी इंप्रूव नहीं हो सकती. राइट, स्टार्ट विद लेस वेट एंड देन इंक्रीज स्लोली. राइट, all right. So this went well. 12 reps and I'll do around 2 more sets. ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाऊँगा इसमें, just 2 more sets probably with the same weight or maybe 5 kg increase in total. So I finish my shoulder workout now. बाकी सारे जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो मैं दिखाऊंगा नहीं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो आई गेस एंड करते हैं.